Hello friends, this is Nutan. Welcome to our mavericks channel. आज इस वीडियो में हम थियरी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड देखा था, हाउ टू सॉल्व एग्जांपल्स, हाउ टू कन्वर्ट इनटू एलपीपी एंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स। ये सब पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किए हैं। अब इस वीडियो में हम थियरी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग और एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन ग्राफिकल मेथड्स. It is useful for two variables LP model. When LPP has more than two variables, we have to switch over to widely used method called a simplex method. And simplex method was developed by American mathematician George Dantzig in 1947. So there are some limitations in graphical methods, and these limitations को सॉल्व करने के लिए एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है, वो जॉर्ज डेंटजिग, उसने सिंप्लेक्स मेथड डेवलप किया है। और इस सिंप्लेक्स मेथड में हम ज़्यादा वेरिएबल्स रहते हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी हम इजीली सॉल्व करते हैं। सो यही हमें सिंप्लेक्स मेथड इस वीडियो में देखना है। तो उससे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ स्लैक वेरिएबल एंड व्हाट इज अ सरप्लस वेरिएबल। सो दोनों कंस्टेंट्स तो हमें मालूम है, एक लेस देन और इक्वल्स टू और दूसरा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो देखिए, if the constraints of LPP is of less than or equals to type, then it can be converted into an equation by adding non-negative variable to the left-hand side of the constraints, and such a variable is called as slack variable. तो स्लैक वेरिएबल्स हमें ऐड करना है, नॉन नेगेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव। तो स्लैक वेरिएबल्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है जबकि हमारा कंस्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल्स टू होता है। तो जब लेस देन और इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट्स आ जाएगा तो हमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करना है। स्लैक वेरिएबल्स समथिंग्स S1 S2 S3 कुछ भी, वो हमें ऐड करना है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। एंड सरप्लस वेरिएबल नेक्स्ट। सरप्लस वेरिएबल्स में क्या है, if the constraints of LPP is of greater than or equals to type, then convert it into an equation which subtract non-negative variable from the left hand side. तो जबकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का कंस्ट्रेंट्स आ जाए तो हमें सरप्लस वेरिएबल्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड उसको हम सरप्लस वेरिएबल्स बोलते हैं। जबकि हमें ऐड करना हो तो उसको हम स्लैक वेरिएबल बोलेंगे। और ऐड कब करना है हमें, जबकि लेस देन और इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट्स होता है तब हमें ऐड करना है। और जब कंस्ट्रेंट्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है तब हमें सरप्लस वेरिएबल्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों स्लैक्स वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स, जबकि हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको उस एग्जांपल में समझ में आएगा कि हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। सो पहले हम जान लेते हैं कैसे ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। सो कंसिडर LPP max z is equals to 3x1 plus 5x2 minus 2x3 subject to x1 plus 2x2 plus 2x3 which is less than or equals to 10. Next equation है 2x1 plus 4x2 plus 3x3 which is less than or equals to 50. x1 x2 x3 all greater than or equals to 0. तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया आपको, अगर लेस देन और इक्वल्स टू हो
तो हमें ऐड करना है स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ पे दोनों भी हमें कंस्टेंट्स लेस देन और इक्वल्स टू है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे ऐड करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। Here both constants are both constants are less than or equals to type. And therefore, we have to add slack variable, slack variable, which is s1 or s2, all are greater than or equals to 0. तो कैसे ऐड करते हैं देखो। तो हमारा इक्वेशन होगा x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। अभी इसमें लेस देन और इक्वल्स टू है तो यहाँ पे हमें s1 ऐड करना है और इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू सॉरी 10। हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 प्लस s2 विच इज इक्वल्स टू 15। एंड यहाँ पे हमारा x1 x2 x3 अगेन एडिंग s1 s2, ये ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और हमारा मैक्सिमाइज z फंक्शन जो है, तो इस z फंक्शन में हमने जितने भी स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं तो वो हमें मैक्स z में ऐड करना है। दैट मीन्स 3x1 प्लस 5x2 माइनस 2x3 और इसका कांस्टेंट वेरिएबल हमें 0 ही रखना है। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो इस एलपीपी को हमें ऐसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सपोज कंस्ट्रेंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तो हमें कैसे सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करने हैं देखो। सपोज 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 215। तो यहाँ पे देखो ये सरप्लस सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कंस्टेंट है, तो हमें सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, 2x1 प्लस x2 माइनस s1 विच इज इक्वल्स टू 250। तो ये हमें सरप्लस वेरिएबल जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो हमने सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे। जबकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है तो हमें सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना है, और लेस देन और इक्वल्स टू होगा तो हमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करना है। नेक्स्ट और एक टाइप का एग्जांपल देखते हैं। सपोज माइनस x1 प्लस x2 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू -10 जबकि दिया होगा, तो हमें इस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे है -x1 प्लस x2, यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है, तो हमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स ऐड करना है। तो हमारा इक्वेशन होगा ये -x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल्स टू -10। तो ये होगा हमारा दिस इक्वेशन। और जब ये यहाँ पे लेस देन है, और जब सपोज हमें 10x1 माइनस 3x2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5 दिया है, तो इसको हमें पहले लेस देन और इक्वल्स टू में पहले कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, -10x1 प्लस 3x2। अब अगर माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना है तो कंस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस का +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी लेस देन और इक्वल्स टू है, तो हमें लेस देन और इक्वल्स टू होता है तो हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन। ये हुए डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स, ताकि ये ऐसे टाइप्स के एग्जांपल्स पूछते हैं
तो हमें कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया है। हमें जबकि ये माइनस में दिया होता है तो पहले हमें यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है तो सिंपली हमें ऐड करना है स्लैक वेरिएबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो पहले हमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को लेस देन और इक्वल्स टू में पहले हमने कन्वर्ट किया माइनस से मल्टीप्लाई करके, और ये माइनस जबकि लेस देन और इक्वल्स टू होता है तो हमने स्लैक वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड किए हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ अभी हम एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP। So max z is equals to minus 2x1 minus 4x2 minus x3 subject to x1 plus 2x2 minus x3 less than or equals to 5, 2x1 minus x2 plus 2x3 is equals to 2, minus x1 plus 2x2 plus 3x3 is greater than or equals to 1. All x1, x2, x3 are greater than or equals to 0. तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन पे हमें कैसे सॉल्व करना है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कंस्ट्रेंट्स देखने हैं और कंस्ट्रेंट्स देख के हमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। पहले मैक्स जेड इज इक्वल्स टू क्या दिया है, -2x1 -4x2 -x3 विच इज सब्जेक्ट्स टू x1 + 2x2 -x3। तो हमारा पहला कंस्ट्रेंट्स है लेस देन और इक्वल्स टू का। लेस देन और इक्वल्स टू है इसलिए हमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करना है। फॉर फर्स्ट कंस्ट्रेंट we add slack variable। Equation will be x1 plus 2x2 minus x3 plus s1 is equals to 5। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। For second constraints it remains as it is because it have equals to sign। For second constraint equal to, the equation remains same। Next, for third constraint, for third constraints, थर्ड कंस्ट्रेंट्स कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। वी सबट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल, यानी कि हमारा इक्वेशन होगा -x1 + 2x2 + 3x3 माइनस, यहाँ पे s1 यूज किया है, यहाँ पे s2 यूज करेंगे। ये तीनों कंस्ट्रेंट्स हमें मिले। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या होगा, देयरफॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म इज max z is equals to 2x1 -4x2 -x3। तो हमें सर s1 और s2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है तो इसमें हम 0 s1 और 0 s2, ये 0 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और जितने भी हमने वेरिएबल्स यूज किए वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे सब्जेक्ट टू। तो 1 बाय 1 तीनों कंस्टेंट्स लिखते हैं, x1 + 2x2 -x3 + s1 is equals to 5। नेक्स्ट 2x1 -x2 + 2x3 is equals to 2। नेक्स्ट -x1 + 2x2 + 3x3 is equals to 1।
यहाँ पे -s2 is equals to 1 and therefore x1, x2, x3, s1, s2 all are greater than or equals to 0. So ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP. Max z is equals to 7x1 plus 5x2 subject to minus x1 minus 2x2 is greater than or equals to -6. 4x1 plus 3x2 which is less than or equals to 12 and x1 x2 which is greater than or equals to 0. So अभी यहाँ पे देखो. So जो हमारा पहला कंस्ट्रेंट है और फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, इसलिए सबट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल. तो यहाँ पे होगा -x1 -2x2 -s1 इज इक्वल्स टू -6. अभी इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन विल बी x1 plus 2x2 plus s1 is equals to 6 multiplying by -1. For second constraint, add slack variable. So equation will be 4x1 plus 3x2 plus s2 is equals to 12. So ये दो constraints मिले हमें, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकेंड. So our standard form, therefore standard form of LPP, standard form of LPP. Max z is equals to 7x1 plus 5x2. हमने दो ऐड किए हैं तो 0s1 plus 0s2 subject to our first constant x1 plus 2x2 plus s1 is equals to 6. Next 4x1 plus 3x2 plus s2 is equals to 12. And finally x1, x2, s1, s2 all are greater than or equals to 0. ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3. मीन z is equals to x1 minus 3x2 plus 2x3 subject to three x1 minus x2 plus 3x3 which is less than or equals to 7 minus 2x1 plus 4x2 which is less than or equals to 12 minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 which is greater than or equals to -10 and x1, x2, x3 all are greater than or equals to 0. So यहाँ पे देखो solution. So for first constraint,
यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है, देयरफॉर ऐड slack variable S1. So equation will be 3x1 minus x2 plus 3x3 plus S1 is equals to 7. For second constraint, less than or equals to a, therefore add slack variable S2. And equation will be minus 2x1 plus 4x2 plus S2 is equals to 12. And for third constraint, greater than or equals to a, therefore subtract surplus variable. And equation will be minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 minus s3 which is equals to minus 2. इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 4x1, ये प्लस का माइनस होगा, माइनस 3x2 माइनस 8x3 प्लस s3 विच इज इक्वल्स टू 10. ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस. सो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन z is equals to x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3. तो पहले हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया, दूसरा भी हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया, और यहाँ पे भी हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया. सब्जेक्ट टू, सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x1 minus x2 plus 3x3 plus s1 is equals to 7 minus 2x1 plus 4x2 plus s2 is equals to 2. 4x1 minus 3x2 minus 8x3 plus s3 is equals to 10. x1, x2, x3, s1, s2, s3 all are greater than or equals to 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4. मैक्स z is equals to x minus y plus 2z subject to x minus z is greater than or equals to 4, y plus 2z is less than or equals to 5, x minus y plus z is equals to 3, and x, y, z all are greater than or equals to 0. तो अभी देखो, तो पहला इक्वेशन, पहला जो कंस्ट्रेंट है हमारा फॉर फर्स्ट कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन ही, इसलिए सबट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल, यानी कि इक्वेशन होगा x माइनस जेड माइनस s1 इज इक्वल्स टू 4. फॉर सेकेंड कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल्स टू ही, so add slack variable. So our equation will be y plus 2z plus s2 is equals to 5. Our third equation, or third constant is equals to, it remains same. So equation is x minus y plus z is equals to 3. So minimize z is equals to x minus y plus 2z. तो इसमें हमने स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट टू. तो x माइनस जेड प्लस s1 इज इक्वल्स टू 4, y प्लस 2z
minus S2 is equals to 5. यहाँ पे साइंस ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, और थर्ड जो इक्वेशन है वो हमारा एज इट इज रहेगा, और एक्स वाई जेड S1 S2 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो ये हुआ हमारा इक्वेशन एग्जांपल नंबर 4. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 5. मीन z is equals to x1 minus 2x2 plus x3 subject to 2x1 plus 3x2 plus 4x3 which is greater than or equals to minus 4, 3x1 plus 5x2 plus 2x3 which is greater than or equals to 7. So x1 x2 is greater than or equals to 0. तो सॉल्यूशन पे यहाँ पे दोनों भी कंस्ट्रेंट से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देयरफॉर फॉर फर्स्ट कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू subtract surplus variable, subtract surplus variables. So equation is 2x1 plus 3x2 plus 4x3 minus s1 is equals to minus 4. For second constraint greater than or equals to subtract surplus variable. So 3x1 plus 5x2 plus 2x3 minus s2 is equals to 7. So ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, इसलिए हमने दोनों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है. Therefore the standard LPP minimize z is equals to x1 minus 2x2 plus x3 0 s1 0 s2. यहाँ पे हमें ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ इस इक्वेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें ऑलवेज ऐड करना है और उसका जो कांस्टेंट है ऑलवेज हमें 0 ही रखना है. सब्जेक्ट टू 2x1 plus 3x2 plus 4x3 minus s1 is equals to minus 4, and 3x1 plus 5x2 plus 2x3 minus s2 is equals to 7, and all x1 x2 x3 s1 s2 all are greater than or equals to 0. So next example देखते हैं. Max z is equals to 6x1 plus 4x2 subject to 2x1 plus 3x2 which is less than or equals to 30, 3x1 plus 2x2 which is less than or equals to 24, x1 plus x2 which is greater than or equals to 3, x1 x2 all greater than or equals to 0. सो सॉल्यूशन पे देखो, यहाँ पे हमारा पहला कंस्ट्रेंट है फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल्स टू, देयरफॉर ऐड स्लैक वेरिएबल. सो 2x1 plus 3x2 plus s1
is equals to 30. For second constraint is also less than or equals to, therefore add slack variable. Then equation is 3x1 plus 2x2 plus s2 is equals to 24. And जो third constraint है वो है greater than or equals to, therefore subtract surplus variable. So surplus variable subtract, that means x1 plus x2 minus s3 is equals to 3. And therefore the standard LPP में क्या होगा, max z is equals to 6x1 plus 4x2 plus 0s1 0s2 0s3 subject to. So first equation is 2x1 plus 3x2 plus s1 is equals to 30. Second equation is 3x1 plus 2x2 plus s2 is equals to 24. And third equation x1 plus x2 minus s3 is equals to 3. So x1, x2, s1, s2, s3 all are greater than or equals to 0. So ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 6. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7. मैक्स z is equals to minus 2x1 minus 4x2 minus x3 subject to x1 plus 2x2 minus x3 is less than or equals to 5. 2x1 minus x2 plus 2x3 is equals to 2 minus x1 plus 2x2 plus 3x3 is greater than or equals to 1. So x1, x2, x3 is greater than or equals to 0. So solution. So जो first constraint है less than or equals to है, therefore add slack variable. So equation is x1 plus 2x2 minus x3 plus s1 is equals to 5. Second constraint is equals to. Equation remains same. So it will be 2x1 minus x2 plus 2x3 is equals to 2. थर्ड कंस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है. सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल. सो इक्वेशन इज minus x1 plus 2x2 plus 3x3 minus s2 is equals to 1. And therefore the standard LPP, standard form of LPP max z is equals to minus 2x1 minus 4x2 minus x3 plus 0s1 0s2 subject to x1 plus 2x2 minus x3
प्लस s1 इज इक्वल्स टू 5, 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 2, माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 minus s2 is equals to 1, and x1, x2, x3, s1, s2 all are greater than or equals to 0. So ये हुए हमारे एलपीपी के एग्जांपल्स, जिस कहाँ पे हमें ऐड करना है, कहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ आपको ये कंस्ट्रेंट ध्यान में रखना है, अगर लेस देन और इक्वल्स टू है तो ऐड करना है स्लैक वेरिएबल, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है सरप्लस वेरिएबल। अगर ऐड करते हो तो उसको स्लैक वेरिएबल्स बोलते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम सरप्लस वेरिएबल्स बोलते हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स देखे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड, दैट इज द बिग एम मेथड देखने वाले हैं। उसमें हमें ये स्लैक वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स दोनों का यूज करना है। दोनों यूज करके हमें वो बिग एम मेथड सॉल्व करनी है। तो एग्जांपल्स उसके बहुत लेंदी है, इजी है बट लेंदी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे। अभी आज इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।